Hi student, today we are going to start integration using partial fraction. So what is partial fraction? That one already I explained you. So once again, a rational function in the ratio of polynomial function suppose as px by qx form, where qx should not be equal to 0. Okay? Remember, if px is if degree of px is lesser than or equal to a degree of qx, not equal to, if it is less than degree of qx, then this is known as proper function, irrational function, proper rational function. If degree of p of x is less than degree of q of x, then it is known as proper rational function. Otherwise, means if p degree of px is greater than or equal to degree of qx, then it is improper. So this is proper. Improper if px degree less than, sorry, greater than equal to qx. ओके, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन. Now let us see form of the rational function and its type. Forms and its type. Form of rational function and form of partial fraction. कितने फॉर्म के रैशनल फंक्शन हो सकते हैं और फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक होगा, कैसे फॉर्म होगा. फर्स्ट, न्यूमरेटर सिर p प्लस सॉरी px प्लस q अपॉन x minus a and here x minus b. Here a should not be equal to x, here x should not, a should not be equal to b. Okay, so in this case
जब भी ऐसा हमें मिले, ये है क्या एक्चुअली, वाई ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बिकॉज ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर या तो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. So that is different case. That case also we will see, but here in this case a is not equal to b. A is not equal to b. In this case what will happen? Px plus q, this total will be broken into a by x minus a plus b by x minus b. ओके, मतलब क्वेश्चन अगर इस तरह का हो तो हम उसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. बी केयरफुल, डिनोमिनेटर लीनियर है तो ऊपर में न्यूमरेटर में कांस्टेंट है. लीनियर है यहाँ पे x माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है. अगर यहाँ क्वाड्रेटिक हो तो न्यूमरेटर लीनियर होगा. ओके, नेक्स्ट टाइप पी एक्स प्लस क्यू. हाँ, द टाइप विच आई सेड. अब मान लो ये इक्वल टू अगर बी हो गया तो क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा. तो इस केस में क्या होगा, सेम थिंग, बट क्या होगा, वन सीट विल बी रिपीटेड. ए अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा इसमें. ओके, थर्ड वन, न्यूमरेटर is quadratic, that is px square plus qx plus r upon here x minus a x minus b x minus c. अब इतना लंबा है तो हमें देख के डरना नहीं है, वैसे ही करना है. ये दो का था. So here two terms we are adding. Here we will add three terms. A upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. Okay. Fourth we will see numerator as it is, means px square plus qx plus r, but the denominator is x minus a whole square into x minus b. सी, जब डिनोमिनेटर ऐसा था तो कहीं पे हमने सी हियर what we did like this, so we have to separate it like this plus this one, that is a upon x minus a plus b upon x minus a whole square plus c upon x minus b. Okay, fifth one here, fifth one is entirely different. Numerator same, px square plus qx plus r upon
x minus a into x square plus bx plus c. Okay, what I said, when it is linear, when denominator is linear, numerator will be constant. So I will break this as a upon x minus a plus, here for this we will not write b upon x square plus bx plus c. We will write linear function bx plus c upon x square plus bx plus c. Okay, where this can be factorized further. इसका हम अलग से फैक्टर भी निकाल सकते हैं. Okay, you can do like that also. This here, see, you can find the factor, then it will become similar to third one. Okay, so these 5 types you have to remember. Okay, this is not a very big task. Now I will solve some question. See, first one. First question I am taking x square plus 1 upon x square plus minus 5x plus 6 dx. This is minus. Okay. So this one I will this one will be broken as this is a quadratic. So how it will broke? Minus 3 and minus 2. Okay, so you know its factor will be minus 3 minus 2. So equal to x square plus 1 upon x minus 3 x minus 2 ओके. अब इसमें कौन सा लगाएंगे? सीधा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं देखना है, डिनोमिनेटर देखना है. So this will be equal to, now see, x square plus 1 upon x square plus 1 upon x minus 3 into x minus 2 equal to a upon x minus 3 plus b upon x minus 2. अब इसका इंटीग्रेशन करना है बस, लेकिन हमें a और b का वैल्यू तो फाइंड होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट both side we will equate the coefficient. Okay, so this side what will happen, this side it will be a into x minus 2 plus b into x minus 3. Okay, this is denominator and this one will get cancelled out. Here is x square plus 1. Now अगर हमें if I want to find a,
ए फाइंड करना है तो बी जीरो की जीरो करना पड़ेगा। बी जीरो कब होगा? जब एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे। ठीक है, ओके। व्हेन विल पुट एक्स इक्वल टू 3, then we'll get the value of a. So put x equal to 3. See what will happen. Here it will be 9 plus 1 10. 10 equal to 3 minus 2 1. So here we will get a. Here x, here it is 0. So a equal to, we got 10. A equal to 10. Okay. I got a equal to 10. Now a equal to 10. Next I want to find b. b हमें निकालना है। ए को जीरो, ये टर्म जीरो करना होगा। ठीक है, ये टर्म जीरो करने के लिए हम एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देयरफॉर पुट एक्स इक्वल टू 2। नाउ सी 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 राइट हियर 5 इक्वल टू, यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ 5 माइनस 3 2। सो हियर 2b। ओके, देयरफॉर b इक्वल टू 5/2। b इक्वल टू 5/2। ओके, b equal to 5/2 or something wrong. Let me check. X square to 5. Okay, 2b 5 equal to 2b. Sorry, here one mistake I was doing. Sorry, I have done one mistake here. That is, I did not check whether this is proper or improper function. See here, degree of numerator and denominator is same. This is same means this is improper. See here, same means improper. This is improper. So improper means you have to divide it. Okay. So after division, whatever is left, on that only we have to operate. Okay. So here what we have to do, we have to divide x square minus 5x plus 6. We have to divide x square plus 1 by this one. Now only by 1 we can divide, because here highest degree is 1. So by 1 what we will get? X square minus 5x plus 6. Change the sign, minus
plus minus, this one got cancelled out. Here we have to write 5x, and here 1 and minus 6 minus 5, no, nothing else. So same can be written as integration of, see, after division this one came 5x minus 5. Okay. So this one x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 dx is equal to, I can write 1 plus, what is the remainder, this 5x minus 5. This one is not divided, so here it is x square minus 5x plus 6, or 1 plus 5x minus 5 upon, can write x minus 2 into x minus 3, factor of this. Okay. Now integration of this one is easily we can found. Now to find the integration of this, assume this as a I1, this one as a I2. I1 is easily we know, I2 just for I2 you have to do partial fraction. Now my trick will be applied, that is how to find A and B. So see here 5x minus 5, 5x minus 5 upon x minus 2, x minus 3, okay, equal to what I will do, A by x minus 2 plus B by x minus 3. So what I will get, A into x minus 3 plus B into x minus 2. Now I want to find A, therefore B I have to make 0. If B I have to make 0, it means x equal to 2 I have to put. If I will put x equal to 2, see here this side, this and this will get cancelled out. Denominator, this is same, no? So denominator will get cancelled out. Just I assume in mind x minus 2 into x minus 3, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा. न्यूमिनेटर में तो इधर क्या बचेगा, 5x minus 5, इतना ही तो बचेगा. ओके, सो आज पुट x इक्वल टू 2, बिकॉज हमें a फाइंड करना है. जब a फाइंड करना हो तो b 0 करेंगे, जब b फाइंड करना हो तो a 0 करेंगे. ठीक है, तो a फाइंड करना है तो b 0 करेंगे. b 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा. x इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. ये हो गया 5 इक्वल टू, ये क्या हो गया, x इक्वल टू कितना पुट किया हमने, 2. x इक्वल टू 2 पुट किया. 2 माइनस 3 इज माइनस 3, सॉरी माइनस 1. सो माइनस ही आ गया यहाँ पे. देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू माइनस 5. Similarly, here itself we will see we have to find b. अब b फाइंड करना तो a को 0 करेंगे. a 0 करने के लिए क्या करना होगा, x इक्वल टू 3 करना होगा. x इक्वल टू 3 करेंगे, सी here x इक्वल टू 3, 5 into 3 15, 15 minus 5 10. So 10 इक्वल टू, here put x इक्वल टू 3, 10 इक्वल टू, इसको 0 करना है तो 0 हो गया. here 3 minus 2, so b इक्वल टू क्या आ गया, b equal to 10 and a equal to minus 5. Now put here b equal to 10, a equal to minus 5. Easily you can integrate this as 10 outside and log x minus 2. Here sorry, minus 5 outside
log x minus 2 and 10 outside log x minus 3. Okay, like that only all integration is there. Complete the example first. Thank you very much.